and welcome to Cover Story. Today we are going to delve into a world beyond the physical but actually go towards the spiritual side, towards the holistic healing. I mean, whenever there is a physical injury, you have your medicines, you have your drugs, you have the doctors who suggesting therapy, surgeries and various kinds of interactions which are on the outside of your body. But actually physical pain has a lot to do with your inner peace, how you feel inside. Sometimes the cause of it is also inside you. And this can be helped by actually talking to people who do either pranic healing, karmic healing, Reiki, or just help you go through, reach to your inner pain. How do they do it? How do they help you? And in what cases is it helpful? These are some of the issues we're going to be raising with a panel of experts today. And they're also going to try and explain to us how they use, because I'm also new at this. So I'm told you use the life energy to actually, to deal with the blocks inside you. Because whenever there's a physical injury, your energy inside you is also blocked, either to take out the toxic energy, the negative energy from inside you. They come and they help you, and it's very easy, I'm told. And also, let's try and ask them to explain it better than I'm doing right now. So joining me on the show is Damini Bhalla. She is a lawyer, but she's also a trustee at the Yoga Vidya Pranic Healing Trust, Delhi. And we have Seema Dutt. She is a spiritual healer. She's a holistic, she believes in holistic therapy, bit of Reiki, bit of, I think, all kinds of healing, pranic healing, karmic healing. She's a face reader. She's also a palmist and a numerologist, and someone who I go to once in a while. But welcome to have you both on the show. Damini, first, can you tell us what exactly is pranic healing? You do pranic healing. So can you explain to our viewers, where I mucked up? What exactly No, you didn't at all. healing? Thank you so much for this, Priya. Pranic healing is a no-touch, no-drug therapy. It works on the energy body or the aura and the chakras, and it's used to heal everything from simple physical ailments to psychological ailments like stress, addiction, smoking, simple ailments like headaches, fevers, coughs, cold, and then more complicated cases like cancer, etc. It's based on the principle of prana, as we know in Sanskrit, or life force. And it's practiced. It's known world over. Like in China, it's called Qi. In Japan, it's called Ki. It's practiced in over 120 countries. We have more than a couple of million people sort of following it. It was founded by Grandmaster Chua Kok Sui, who's a chemical engineer by profession himself, and spent over 20 years researching and experimenting on pranic healing and the effects of pranic healing. And he's written 45 books and created almost a cookbook-like scientific approach to pranic healing. Is it a science? Is there like a school, you get a diploma? How does it work? Yes, it is both a science and an art. It's taught over a 2-day course. The basic pranic healing is taught over a 2-day workshop. And there are 3 levels of healing. I think you learn to deal with physical ailments, and then you learn to heal faster with color pranas. And then the 3rd level, you learn to deal with stress, addiction, and a lot of the psychological healing. It works on the principle of removing dirty energy from the body and the chakras and filling it with clean energy. It's like a coffee cup. You first empty and rinse out your coffee cup and then fill it with fresh coffee. So you do the same with the energy body. Okay. And in every class that I've attended over the years, everybody who's walked into the class, whether they're a skeptic or whether they're a believer or sensitive to energy healing, everybody has walked out, I think, believing in pranic healing. Okay, so it's very experimental. Supposing I have a knee pain, I have a yes, actual, problem with the knee, which a ligament is torn or something. Can you fix the ligament that is torn without steroids and without outside intervention? Yes, you can. I think, in the case of ligaments and broken bones, if there is a physical intervention that's required, like if you need to stitch the ligament, then that needs to physically be done. Sure. What you can do is accelerate the process of healing. Why not? It's a complementary therapy to modern medicine. It works in tandem with modern medicine. But there are some things like a broken bone, like a torn ligament, where you need stitches or you need a cast so that the energy can then work to bring the bones back together in that position. But then the pain of healing is what? The pain of surgery, the pain... the pain pains you can deal with. Of course, you can deal with the pain. You can also accelerate the healing of the ligament. Okay. So I remember we did an ACL tear case where after the stitching was done of that tear, the doctors said it would take about 6 months or 8 months before this person could walk again. And, with all the physical exercises and physiotherapy, this person was back on their feet and back to dancing in a matter of a month and a half.
with pranic healing. with pranic healing. Okay. So Seema, pranic healing is one part of it. तो आप क्या करते हैं? Does it, in terms of किस तरह के patients आते हैं आपके पास और आपका क्या process है? प्रिया, मैं क्योंकि चाइल्डहुड से कर रही हूँ और जो भी नॉलेज है मेरे पास सारी प्रीवियस बर्थ की है, तो जब मैं करती हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली पता चलता है रूट कॉज। मैं रूट कॉज को सबसे पहले करना चाहती हूँ। तो आपका इंट्यूशन होता है? इंट्यूशन होती है, बॉडी को स्कैन करती हूँ, ऑरा क्लेंस करती हूँ, तो उससे काफ़ी बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी दामिनी ने लिगामेंट का, माय बोथ सन्स आर फुटबॉल प्लेयर्स, उनके तो रोज होते हो? बहुत होते थे। तो वो डेली उनका था कि मुझे रात को उनको हीलिंग देनी होती थी, और नॉट ओनली देम, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आते थे। तो हाँ, लिगामेंट वगैरह टेयर हो गया, सब ना, मेनिस्कस डैमेज है, तो ये सब तो बहुत की है। Since आपके साथ थोड़ा मेरा परिचय है, I've been seeing people with cancer also coming to you, Cancer other serious illnesses also. तो उनको आप do you help them deal with cancer का क्योर, वो रेडियो कीमोथेरेपी लेके आते हैं, या बिना कीमोथेरेपी के भी आप हेल्प कर मेरे सकते पास हैं? मोस्टली लास्ट स्टेजेस के आए हैं। अच्छा। तो उनका जो लाइफ स्पैन है, जैसे डॉक्टर ने कहा 1 or 2 days, मैं उनसे पूछती हूँ कितना मंथ यू वांट टू लिव, 5 months 6 months, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करके 9 महीने आगे एक्सटेंड किए उनकी लाइफ को, एंड बहुत अच्छे से गए वो लोग विदाउट एनी पेन। वो जो था ना कि उनको मॉर्फिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो सब बंद हो गया था। तो दे डाइड पीसफुली, बहुत अच्छे से सबके सामने। एंड एक्सीडेंट के कॉमा के जो केसेस आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। कैसे उनसे कनेक्ट करना है, उनको टेलीपैथिक मैसेज देना है कि अब तुम्हें उठना है, ओपन योर आइज़, और ये सब ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी तक टच वुड सारे सब ठीक हैं। आपने कोमा पेशेंट्स को भी उठाया है आउट ऑफ कोमा? हाँ हाँ बिल्कुल, एंड नाउ ही इज़ अ वेरी गुड मॉडल। बहुत बहुत हैंडसम लड़का निकला है, जिसको सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं, अगली बार उनको लाना स्टूडियो में, वी वुड लव टू टॉक टू हिम। सो ये आप के लिए यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, क्या आप? नहीं, मैं डिस्टेंट हीलिंग भी करती हूँ। अब हॉस्पिटल्स में आईसीयू में कहाँ मैं जाऊँगी, कई बार सर्जरीज चल रही होती है, मैं साइमल्टेनियसली मैं घर से बैठी कर रही होती हूँ कि सक्सेसफुल हो जाए। हाउ डू यू डू इट? यू डू माइंड वेव्स? माइंड से एंड विजुलाइज करके, इनफैक्ट वहाँ प्रेजेंट रह के मैं करती हूँ। अभी यूके का एक केस था, वो 17 यूनिट्स उसको ब्लड चढ़ चुका था, बट वो सारा पॉइजन हो रहा था। सिंपली जब मैं करने बैठी, उसको आइसोलेशन में रखा हुआ था, बहुत ही वो समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टाइप ऑफ अ केस है। तो वो वाज ओनली 27 years old लड़का। तो जब उसका किया, आई थिंक विद इन 10 days वो आईसीयू से बाहर था, और घर आई थिंक 1 महीने में घर आ गया था। सिर्फ ब्लड को कैसे प्योरीफाई करा, सब कुछ किया ना, बहुत डिफिकल्ट था। So does it take away from your energy? आप उसके बाद mentally drained out होते हैं कुछ? Never. मुझे लगता है कि मुझे और एनर्जी मिल रही है। आई फील हैप्पी, बहुत खुश होती हूँ मैं। और ये मेरा ठीक है, मैं हाथ देखती हूँ, बहुत लोगों को बताती हूँ, बट सबसे अच्छा काम मुझे ये लगता है हीलिंग का। बहुत ही अच्छा। It involves aura cleansing, सब कुछ पूरा स्कैन करना, ऑरा क्लेंजिंग, एनर्जी चक्रास को बैलेंस कैसे करते हैं आप, तो वो सब चीज़ें। कई लोगों का इतने ज़्यादा सुसाइड के केसेस जैसे होते हैं, तो डिप्रेशन, हाँ, तो घर से जैसे आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, तो एक बार बुलाती हूँ मैं उनको, उनके सारे चक्रास बैलेंस करने के लिए। अब इफ़ दे आर रिलक्टेंट कि नहीं आना नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर मैं यहीं से करती हूँ कि वो किस तरह से एक बार मेरे पास आ जाए। क्या पता वो प्रीवियस बर्थ का कुछ हो, ब्लॉकेजेस हो बॉडी में ना, तो उसको हटाने के लिए एक बार तो प्रेजेंट होना पड़ता है, बट वंस ओनली। Okay, I'm going to come back to you, Seema. But Damini, again, like Seema is saying, it's not just physical injury cases. Cancer is not a physical this thing. I mean, it is, but also depression, emotional cases also you help. Yes, we do a lot of. It's called pranic psychotherapy in level 3. Pranic psychotherapy. Psychotherapy. So we work on a lot of the emotional ailments, because we've realized that most ailments are actually emotional. The origin is emotional in nature. So you work on emotional ailments. We've done a lot of cases of stress, of cigarette addiction, tobacco addiction, drug addiction, alcohol addiction. Yes, and So actually seen some fantastic results in those cases, and just a couple Does of it healings. involve hypnotherapy then? Because addictions are also a thing of the mind, right?
So yeah, I think all energy systems at some level have the same origin, but in pranic healing, you clean the chakras. There are certain entities associated with psychological diseases or psychological symptoms like stress, etc. So you remove that dirty energy and you sort of talk to the patient, and I think over time, in a couple of healings, sometimes it's one healing, sometimes it takes longer. It depends on the patient, the willingness of the patient to also change. But in almost all cases, we have seen tremendous success, and we've what do seen you do? globally. If I come to you, I'm sitting, you need me to be present physically. Not necessarily. We can do it in person, or we can do it distantly as well. Okay, so what do I have to do? I have to be sitting in a certain way when you're doing the healing, or I can do my own thing and you're just doing the... See, it's always better if you're receptive to the healing, and if you're sitting in a receptive posture, the healing is obviously more effective and faster. That doesn't mean that we can't do it when you're in, when somebody is in the ICU or when someone's not necessarily receptive. It can be done at any point in time, healing. And what do? We cleanse the energy body, we cleanse the chakras. So we remove, there's a process called cleansing where we remove all the dirty energy, and then we fill the body with clean energy. And you do it while meditating? I mean, what are you doing? No, we do it, so I think energy exists, all around us, from the air, the sun, the water. You yourselves have energy, and there is higher spiritual energy. You use that energy and channel that into the aura. I know it sounds a little hard to believe, but trust me, it is extremely scientific. When I walked into the first class, I was an absolute skeptic. Acha. How long have you been doing this? I learned pranic healing when I was 17 in law school. So a lawyer doing this means your reasoning has been satisfied and your rational yes, mind because is you okay approach with it as a complete skeptic, right? And so I was just fascinated by a batchmate of mine talking about this, and he organized a course at law school. So that's where we did it. And I suddenly realized that there was something beyond the physical body. So it's been absolutely fascinating. And you see systematic results practiced by, everybody in a course or across the world, right? Everybody is finding the energy or the size of the chakra at exactly the same point. You can put 10 people in a room and you're finding it at the same point. So it's very, very experience-based when you're teaching. Yes, if we're healing you and we're looking for whether your chakra is what we call congested or not, and I think you put 10 people in a room who've done the course, we will find it. We will find the same result, yes. Because it is that precise and specific. So there is a preciseness to it also. Absolutely. Okay. So Seema, I noticed आपने बोला था karmic past life का भी impact होता है. तो you believe in past life and there is you also. I remember my past lives. You course, do? Yeah. You were a healer in your past life? हाँ, कभी numerologist, कभी astrologer, कभी palmist, तो वो मिला जुला है इस birth का. देख के पता चल जाता है इंसान को कि उसके अंदर क्या problems हैं ना. फेस रीडिंग भी बहुत करते हैं. अच्छा. So do you फेस रीडिंग से आपको फोटो से भी आप फेस रीडिंग कर सकते हो? लोग आजकल पिक्चर्स ही सेंड करते हैं ना. They send you pictures online. But don't you need to know about the person? I mean, to get the vibe, मिलना नहीं. I'm very skeptical about this long distance that both of you are doing. नहीं, अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास उसकी पिक्चर है, तो मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगी उसका. सारा future and पता होगा. I know. But back to the healing part, because today I want to focus more on the healing thing. तो healing का अगर कुछ होगा कि past life में कुछ किया है जिसका impact इस life में आया, and that is why you are having that suffering, maybe a knee pain or a headache or migraines. मेरे पास dancers आई हैं, बहुत से dancers भी हैं मेरे पास जो blockages उनके life में इतने थे कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे. तो आज वो बहुत successful हैं, अच्छे हैं. सुसाइड का केस आता है तो मैं कहती हूँ 1 महीना मुझे टाइम दे दो, उसके बाद तुम यू कैन ट्राई एनीथिंग. तो 1 महीने में उनका पूरा चेंज हो जाता है, उनका रूटीन चेंज हो जाता है. मैं कहती हूँ एवरीथिंग इज़ इन माइंड. वो पुराने कहते थे ना लोग, आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही रावण है. रावण इज़ योर माइंड, राम आपका सोल है. तो जितना आप माइंड को कहोगे शट अप, वो हमेशा गंदे थॉट्स कि नहीं अल्कोहल इज़ वेरी गुड, हमें पीना चाहिए, एंड उसको पी के मुझ में एनर्जी आती है. तो उस माइंड को आप शट अप कहोगे और अपने अंदर से अपने राम को जितना ज़्यादा ऊंचा करोगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है. But I need you to help me. Shouldn't I be worried that I'm giving you control of my mind? नहीं,
हम आपके माइंड को हील कर रहे हैं. अब सुसाइड के केसेस हैं, तो उसके माइंड की, उसकी थॉट से तो प्रोसेस चेंज करना है ना. उसको ये बताना है कि तुम कितने गुड लुकिंग है, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना सब कुछ तुम कर सकते हो लाइफ में. उनके अंदर से कॉम्प्लेक्सेस को सारा निकालना है. इन्फीरियॉरिटी है, कुछ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वालों को भी डिप्रेशन होता है, जो या दे थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ. और उसके बाद जब वो एकदम से फॉल आता है, जब सब लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं. मोस्टली बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह के साथ ऐसे होता है जैसे ना. तो इस तरह के केसेस होते हैं. Okay, I'm going to keep the conversation going, but after a very quick break, so stay with us. Hello and welcome back to Cover Story. Today we are taking a look at the world of holistic healing. What are the options? What is pranic healing? Is it different from Reiki? How can you heal someone without actually physically meeting the person, without physically touching the person? Yet you can tap into the energy, you can take out the negativity inside them, and which is also the negative energy is causing the physical pain, and help them by cleaning their aura. And so this is what my I want to circle back to that point again. By physically not meeting the person, how do you cure them? That's something both of you are doing it, and I really want to answer. So energy follows thought. Energy follows thought. Thought, right? And between two people, when you think about somebody, you're creating an energy link. So you use that to heal the person. I mean, I was I think much more of a skeptic than probably you are when I started. But I saw results on distant healing patients year after year, and not just by me, by millions of people across the world who were practicing pranic healing. So it works. You feel the energy. There were 4 of us in the room healing a patient at one point in time, and all 4 of us had the same result of what the problem was, and what was happening with the healing. So this got validated over time again and again, but that's essentially the principle. So same thing, Seema, you also do auras, which is telepathic connection आप करते हैं. बिल्कुल. और I do psychic surgeries also. Psychic surgeries, that's हाँ, किडनी स्टोन्स निकाले हैं. बहुत psychic surgeries तो बहुत करी हैं. और ब्रेन ट्यूमर का है, अभी पूरा उसका नहीं हुआ, बट श्रिंक हो चुका है. इज़ इन न्यूयॉर्क, 31 years old का है. तो काफ़ी श्रिंक हो चुका है. उसके सारे लेवल्स, जैसे विजन ख़राब हो गया था, एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया, एंड वो श्रिंक हो गया उसका साइज़ ना ट्यूमर का. जब आप देखते हैं, यू कैन रीड द पर्सन्स एनर्जी, तो हाउ? मैं बस सिर्फ उसको विजुलाइज करती हूँ, और उसके अंदर जो चीज़ है, मैं सारे स्कैन्स देखती हूँ. मैं उनके सिटी स्कैन्स वगैरह सारी रिपोर्ट्स मेरे को चाहिए होती हैं, वो सब रीड करने के बाद वो करती हूँ. फिर जैसे क्लॉग्ड आर्टरीज आती हैं, हार्ट की हैं, वो किया है साइकिक सर्जरी से. किडनी स्टोन्स तो बहुत रिमूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. So you need the physical scan just to see where the problem is. Exactly. मैं उस जगह पे फोकस कर सकती हूँ ना. Now some fun things. Supposing I am having a problem in a relationship and I come to you, okay, bhai, this person is behaving weirdly, not behaving well with me, or he's gone off me. Can you change his mind around? Can you help him? Or not help him, but can you? नहीं, मैं दोनों के पिक्चर्स देखूंगी. अगर दोनों का आगे लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टर्म आगे अच्छा है, मैं वहाँ आपको कहूँगी ठीक है, गो फॉर इट. फिर मैं स्टार्ट करूँगी, विद योर परमिशन मैं स्टार्ट करूँगी, एंड हीलिंग सेंड करूँगी. आपका प्लस पॉइंट्स जो थे उसके दिमाग में वापस वो करूँगी कि उसको याद आए. ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, और जब उसको याद आएगा, he'll feel the same emotions और वो सब attachment, फिर वो वापस आ जाएगा आपके पास. But you see, if there's no future in the relationship, you don't do मैं it. मना कर देती आप मना कर देते हो कि this में आप don't go down this road. बिल्कुल. And what are the other relationship problems that people come to you with? I know we are going a little off course here, but बहुत ज़्यादा आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. कई तो लड़कियाँ आती हैं, वो पिक्चर्स लेके आती हैं कि मैम इसका कर दो, दीदी इसका कर दो. ये मैंने कहा ना, जब तक वो फिजिकली प्रेजेंट यहाँ नहीं होगा और वो कहेगा कि उसको भी अटैचमेंट है तुमसे, ही लव्स यू, तब तक मैं नहीं करूँगी. मैंने कहा तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आ गई, तुम्हें वो चाहिए, दैट्स रॉन्ग ना. So consent is important. बिल्कुल. It is a very important part of what. बिल्कुल. और कैसे केसेस आते हैं? बहुत टाइप के, मतलब डिवोर्स केसेस, सेपरेशन के. मोस्टली रिलेशनशिप्स बहुत हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड वर्ल्ड. हाथ देखती हूँ, कहती हूँ यार, लास्ट ईयर मैं लिटरली मैं किसी के फेस पे हंस दी.
मैंने कहा कोई अभी तक ऐसा नहीं आया जो सिंगल कहे कि आई एम हैप्पीली मैरिड। सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं और ठीक है, ये लाइफ है तो ठीक है। नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। Emotional cycle relationships, can you help in that? Yes, we do a lot of relationship healing. Relationship healing. Yes. So two peoples are having problems, there is friction in the energy. You heal the couple, you sort of get them to bless each other, to sort of reinforce positive thoughts about each other, and you also get the couple to work together towards resolving differences. We're not going to decide the outcome. I don't think we have a role in that, but we try and sort of make sure that whatever decision they take and whatever both sort of partners want, that relationships gets better over time. But both have to again be agreeing to it. Even if one agrees, you can bless the other person, you can cleanse and energize. We follows a simple process of cleaning all the anger, the resentment, the frustration, I mean whatever it is, that the emotion that you're sort of dealing with, and replacing that with better energy. So over time, sometimes even if you just do an energy cleansing, you'll start to see relationship results. But we're not manipulating the energy for a particular conclusion. That's not something that we do. And she mentioned past life has an impact. Do you also believe that? Yeah, we in fact have a spiritual sort of set of courses on Arhatic Yoga which talk about the union with the soul and how to accelerate the union with the soul. And like she mentioned, I think earlier, a lot of diseases sometimes are because of A the past life. But we work on the current energy body to clean what you're currently going through, whatever the current ailment is. That's what our focus is. So how do you use the past life? Same. उनको हीलिंग सेंड करती हूँ एंड ये सेंड करती हूँ कि उनको ड्रीम्स में भी ना कुछ पास्ट लाइफ के विजन्स आने शुरू हो जाएं, कि एक सेशन इट टेक्स वेरी लॉन्ग। तो 1 घंटा दे दिया और पास्ट लाइफ में हम गए, हमें पता चल गया कि उसके पैर चेंज थे, तो हम वो डांस नहीं कर पा रही है खुल के, सब इतने ऑब्स्टिकल्स हैं उसकी लाइफ में। तो बाकी उसको वो करूँगी कि वो नेक्स्ट पास्ट लाइफ में अपने जब वो ड्रीम स्टेट में होगी तो वो उसमें जाएगी, एंड बहुत सक्सेसफुल हुई है उसमें। बहुत केसेस ऐसे अच्छे रहे हैं जहाँ पे उनके पैर फ्री थे, तो ताकि वो उसी मेमोरी को लेके इस लाइफ में आए। बिल्कुल That's how it works. बिल्कुल, बहुत अच्छे रहे हैं अभी तक। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती क्योंकि वो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं इस वक्त, तो बट दे आर वेरी सक्सेसफुल। वो इतने ज़्यादा बंधे हुए थे पिछले प्रीवियस 2-3 बर्थ से ना, हर लाइफ में दे वर सिंगल, अलोन, रोमिंग हियर एंड देयर। सो But then that person has to accept कि I have a past life, so it has to be a believer. वो हो जाता है ना, जब वो सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्या क्या कहा, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करी हमने, तो वो जब उस ट्रांस स्टेट में वो सब सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना पास्ट पर, और सेम प्रॉब्लम्स उनको इस बर्थ में भी है, तो हम पास्ट को पहले हील करेंगे ना To connect to this one. हाँ, तो वो प्रेजेंट ठीक हो जाएगा। पास्ट हील हो गया तो आपका प्रेजेंट अपने आप ठीक हो जाता है। And final word, anything you want to add that I've left out, any of you? I mean, we use pranic healing also. We have courses on prosperity and feng shui as well. So we use, and feng shui. yes, Kriya Shakti on the art of materialization. We also use, we do an energy feng shui, which is like an energy form of vastu, where you're scanning the energy for your house, for your offices, etc. as well. So that's also where pranic healing is applied. So if I'm like going in for a job interview that I really want or something, you can help me get the job? हाँ, We can help remove obstacles to get the Bilkul. job. Yes, I mean we can help you work in the energy towards a particular goal to manifest that. So you can help the process, but you can't guarantee कोर्ट it. केसेस में आप हेल्प कर सकते हो। अगर Court आपको cases. जज का नाम भी पता है ना, तो आप उस केस में भी You can change the verdict. नॉट चेंज द वर्डिक्ट, मतलब उनके फेवर में हो जाए। I mean, in favor. अभी मेरे 31,000 में चल रहा है केस, मैं So करके you आई help the case along. Yeah. Okay. That's a very interesting नहीं, concept. बहुत आते हैं, प्रॉपर्टी के बहुत इश्यूज आते हैं, डिस्प्यूट। But you can just, I guess you cannot say कि बिल्कुल ही आपके फेवर में जाएगा अगर फेवर में नहीं है. नहीं, बट ये नहीं होगा कि डिसमिस हो जाएगा आपको। जो भी टाइप का केस है ना, वो एकदम से इनके फेवर में ही जाता है, या तो फिर डेट बढ़ जाती है, तो हमें भी टाइम मिल जाता है। तो जैसे ही वो टाइम मिला कि नेक्स्ट डेट जो है वो 20 डेज के बाद है, तो हमें टाइम मिल गया। पर जो मेरा राइट है, हक है, वही मिलेगा ना मुझे, ये नहीं Of course वही मिलेगा। you हाँ, cannot नहीं, वो नेगेटिव तो हम वैसे भी नहीं करते। you cannot do.
So you will help us in getting our rights, what is due, Bilkul, bilkul. whether it is a job, whether it is a court case. Have I got that right? Okay, on that note, I think it's been a very interesting discussion as I've tried to understand what exactly is holistic healing and what is there for us. You know, there are really no boundaries or limits, and after all, you know, one is always open to suggestions and one can try new things, and if it helps us, then all the better. But that's it for now. Thank you for watching this show. We'll see you again same time next week. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.